Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has stirred a hornet's nest with his speech on the Population Day, and this population control face-off has escalated. While Yogi Adityanath spoke of awareness and enforcement to keep population in check, he also said that no one section of the society should grow faster than others. Asaduddin Owaisi of the AIMIM has hit back at Yogi Adityanath, insisting there is no population explosion of any one section of the society. He said India's fertility rate is below the replacement level. There is no population explosion. The worry is to ensure a healthier and productive young population, on which Asaduddin Owaisi insists that the Modi government has failed. Earlier, the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath had said population control should not create a demographic imbalance. Population explosion should not create a demographic imbalance. He insisted that the rate of population increase of any one section of the society should not be more than others, because that would lead to trouble in society. Let's listen in to Yogi Adityanath. I'll get you much more on this story. हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सब से ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। जनसंख्या का विषय सिर्फ हमारा विषय नहीं है, ये भारत के हर जागरूक नागरिक का विषय है, क्योंकि इसके साथ हम सबका भविष्य और हम सबका विकास जुड़ा है। तो निश्चित रूप से इसमें देश के जन सामान्य से लेकर राजनीतिक दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक सही दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। भारत के अंदर सुरसा की तरह जनसंख्या की गति बढ़ रही है। अगर ये गति एक कड़े कानून से ही रुक सकता है, सभी धर्मों के लिए कानून समान हो, तभी ये रुक सकता है। अगर ये नहीं रुका तो भारत को विश्व के रफ्तार में, विकास के रफ्तार में, विश्व के स्थान पर पहुंचने में कठिनाई होगी, क्योंकि हमारा संसाधन सीमित है। सीमित संसाधन में ये सुरसा रूपी बढ़ती हुई आबादी हम प्रतिदिन ऑस्ट्रेलिया और इजराइल एक साथ पैदा कर रहे हैं। 2 करोड़ से ऊपर बच्चे पैदा हो रहे हैं। Let's try and make sense, because when the Chief Minister of a state says something as big as this, is this a political statement or is it backed by facts on ground? Joining me on the broadcast, India Today's Samarth Srivastava from Ground Zero. Also with me, our National Affairs Editor Rahul Srivastava on this big story. But Samarth, bring us the context of what the Chief Minister said, especially when he talks of arajakta or lawlessness and avyavastha, that is taking place on ground. On what basis did he make such a huge statement? Well, obviously, Gaurav, that's a huge statement coming from Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, where he just did not speak about that particular population control, but also said that there shouldn't be the way that one particular community should raise population, and he also talked about the population balance
And that was the main agenda throughout his speech. He said that there should be population balance. He was concerned about the population, about the overpopulation in the state of Uttar Pradesh, as the state is obviously the most populous state when it comes to the population. So that is a big thing and statement coming in at a time when Uttar Pradesh is obviously preparing that particular population bill, which is in the making and could be presented before the Chief Minister when it will be ready completely. So it's a big thing coming from Uttar Pradesh Chief Minister, and what we know, and when we spoke to the people in law, they clearly said that population control is the need of the hour, and that law is about that, where nobody will be allowed to produce more than 2 children, and that is something they'll not be allowed to do, to get job in government services, and many more will be around in that particular law. And now Chief Minister of Uttar Pradesh is saying that there shouldn't be, that there should be a balance when it comes to population, and not one particular community or not one particular section could be allowed to raise population in numbers. Is a significant message from the Uttar Pradesh, though it will be seen as a political thing, because we have already got reactions from Samajwadi Party, where Anurag Bhadoria, spokesperson, slamming the Chief Minister. Sanjay Chauhan, lunch partner of Samajwadi Party, obviously slamming the Chief Minister and saying that BJP is obviously doing such politics. And you have obviously seen the tweet of Asaduddin Owaisi, in which he is claiming that there is no population, there is nothing like overpopulation, and he even slammed the Prime Minister and Chief Minister about all them. Stay with me for a moment, and before we bring in Rahul Srivastava into this conversation, let's quickly listen in to the Uttar Pradesh Chief Minister once again. He's not only talking about creating awareness, he's also talking about enforcement, and he's insisting that no one section of the population should grow more than the others. Resources for all. He's also talking about Mool Nivasi ki Jansankhya. Now that again is a huge statement coming in from the Chief Minister, and we'll get Rahul Srivastava in to talk about this in greater detail. But let's listen in to the Uttar Pradesh Chief Minister, Yogi Adityanath. तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो, उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है।